If I give all of you 3 options, what would you choose? Let me know in the comment box. This is a very serious question. Options are gold, silver and Bitcoin. Let me know कि as an investment purpose, and it's not like, at any circumstance. I'm only referring to this particular moment. Jabki we are in a red hot recession, global recession. Inflation rates are high. Most of the countries are in negative GDP growth. Import export का जो mobility है वो भी बहुत हद तक कम चुका है. In total 5 to 6 countries are in war. इस मोमेंट पे ये तीनों ऑप्शंस में आप क्या चूज करोगे? गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन. मैं रियल एस्टेट भी बोल सकता था. आई जस्ट डोंट वांट टू इंक्लूड रियल एस्टेट इन दिस 3 ऑप्शंस क्योंकि रिसेंटली लाइक अदर कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर, बिटकॉइन भी इज वन ऑफ द कमोडिटीज राइट नाउ. तो इन तीनों में से आप क्या चूज करोगे? सो रिसेंटली इफ यू कैन चेक द प्राइस एंड ऑल दिस थिंग, वी कैन सी गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो गोइंग डाउन अगेंस्ट यूएस डॉलर. इट्स नॉट लाइक कि जब इतना ज्यादा रिसेशन है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, पीपल आर पुटिंग देयर मनी इनटू गोल्ड, people preserving gold and all this thing. It's not happening anymore. First time in the history of recession, first time in the history of inflation, and this Great Depression, first time significantly on everyday basis gold is going down. So last day क्या हुआ है? Gold is down by 0.85% and silver is down by 0.89% against the US dollar. Respectively, platinum is down by 2.82 and palladium is down by 4.18 against US dollar. As we all are discussing since the first day, this time the market is different. This time options are different. Views are different. In short, this time the complete scenario is different. ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जबकि रिसेशन के टाइम पे सिग्निफिकेंटली ऑन एवरीडे बेसिस गोल्ड इज गोइंग डाउन. तो ये मंथ का जो मंथ टू मंथ चेंज है गोल्ड का, विच इज क्वाइट अग्रेसिव. तो मंथ के स्टार्टिंग पे लाइक इन द मिडल ऑफ द ऑगस्ट इट वाज समवेयर अराउंड 1800. On 1st September, according to 1st September, it is somewhere around 1700. This is a huge drop compared to gold's price stability. We don't expect this kind of volatility in the matter of gold. So now, crypto space में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके चलते हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए. So what are all those things? We will discuss in this video. So this is going to be a very informative, at the same time very knowledgeable video. If you are interested in any of this, getting all the information, market information, please stick to this video till the very end. And अगर अच्छा लगा, then share this video with your friends and family, and do not forget to subscribe this channel to get all this kind of important updates on this critical time every single day. At the same time, be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the technical updates like Bitcoin chart and trading updates like trading calls whenever we need, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस वन थिंग एडिशनली विच इज द बिटकॉइन चार्ट, जो कि कल भी मैंने डिस्कस किया था एंड कल मैंने कुछ बोला था एंड वही मैं रीचेक करना चाहता हूँ कि अब ऐसा हुआ है कि नहीं. अगर ऐसा हुआ है देन व्हाट शुड वी डू नाउ, एंड ऐसा अगर नहीं हुआ है सेम व्हाट शुड वी डू नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट. So from yesterday's update, कल का जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तब बिटकॉइन का जो मूवमेंट था इट वाज समवेयर अराउंड हियर. तो मैंने ये बोला था इट सीम्स लाइक अ डबल टॉप, बट साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ट्रिपल बॉटम. सो पॉसिबिलिटीज आर एक्चुअली वर्किंग आउट हियर. अगर किसी को अगर जानना है कल के वीडियो से, अगर फॉलो अप करना है, यू कैन गो बैक एंड चेक यस्टरडेज वीडियो. एंड इफ यू वांट टू चेक दिस चार्ट फ्रॉम द बॉटम, आप डे बिफोर यस्टरडे का भी वीडियो चेक कर सकते हो बिकॉज आई एम डूइंग दिस चार्ट अपडेट एवरी डे. सो जो मूवमेंट है अभी विच इज 1 2 3 ट्रिपल बॉटम विच इज अ वेरी बुलिश. बट इसके मतलब क्या हम लोग इस पे जंप करते हैं? नहीं. कल मैंने ये ट्रिपल बॉटम के साथ साथ और 2 कंडीशन के बाद बताया था. फर्स्ट, अगर बिटकॉइन का प्राइस इज डाउन बिलो 19,500 देन विल गो शॉर्ट. एट द सेम टाइम इफ बिटकॉइन का प्राइस इज अप अबव 20,500 विल गो फॉर अ लॉन्ग. In this zone, try to avoid this chopping situation, क्योंकि हम पैसा तभी खोते हैं जब हम ये साइडवेज मूवमेंट को ट्रेड करते हैं. ब्रेकआउट ट्रेड करना स्टार्ट करो, you will have less possibilities to lose your money. So let's see next 24 hours पे क्या होता है. If there is anything to update in tomorrow's video, definitely I'll make a small update for chart tomorrow. But as for today's point of view, there is nothing. Just wait and watch.
So now the news I especially want to discuss about, which is the El Salvador's recent move. Since we all know El Salvador is a Bitcoin dominated country, जिसको बोलते हैं Bitcoin is the legal trade there. You can buy start to beer with your Bitcoin. So now in 2022 में El Salvador supposed to release a Bitcoin bond, जैसे कि gold bond होता है, mortgage bonds होता है, same Bitcoin bond. तो last 8 months से ये जो Bitcoin bond का जो releasing date है ये postpone होते जा रहा है. Now what is the reason behind this? The only reason behind this, those who are releasing this, those who are studying the market, they are way more intelligent, they are way more experienced than us. They can actually sense the market in advance, at least 6 months to 1 year in advance. Otherwise, they can't save their country, otherwise they can't save their economy. So they can sense कि आने वाले 6 months तक भी Bitcoin का जो movement है, उसमें कुछ सुधार नहीं आने वाला है. अगर in next 6 months पे कुछ भी possibilities नजर आया होता, then they would have launched their Bitcoin bond. क्योंकि ये लोग launch करते ही ये bond sold out हो जाएगा. Since we all know El Salvador is a very Bitcoin rich, very Bitcoin friendly country. बच्चे से लेके बूढ़े तक Bitcoin hold करता है. So if they are postponing this plan, then definitely we should plan our personal investment because the world is witnessing some disaster right now, catastrophe. हम लोग बीच में भी नहीं है, हम लोग starting पे भी नहीं है, हम लोग उस पार भी नहीं गए हैं. मतलब we don't know where are we standing right now. We don't know what is the situation of the globe right now, what is the situation of the economy right now. So better we should check our spending, we should check our investment, we should check everything, we should sit on the cash right now before we get any confirmation. But I am keep on investing as planned every month. So that is my personal problem. That is my personal issue. If you want to stick to your, financial goals, financial commitments, you should do whatever you feel good for you. So that's it from my side, guys. That was a early heads up. कल के वीडियो पे भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है. अगर किसी को जानना है एडिशनली देख सकते हो लास्ट कुछ दिनों का वीडियो जहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन्ड है एंड यू ऑल कैन गेट अ नॉर्मल आइडिया व्हाट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड एंड व्हाट यू शुड प्लान योर एवरीथिंग राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 1 year to 6 months. So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, love this video by liking this, subscribing this and sharing this. Also be a part of our Twitter and Telegram handle where we post only the vital updates whenever we need. Thank you for watching. Dave signing off.